Well, it's time. The final game for the evening. Welcome, ladies and gentlemen, once again back to eISL Season 2. Because what an amazing day has it been so far, right? Finally, we're not getting to see a lot of those ties anymore. Now, teams are getting decisive. They are winning it all. And joining along with me, as always, is going to be TT. So, yeah, I think, from your Renards, not going to be happy about ATK Mohan Bagan winning, but it's all right. You were still unbiased, and I've got to give you the credits for that. But now let's focus on the match in hand, right? We've got Hyderabad FC finally making their way in, playing their first game in eISL Season 2, going up against Chennaiyin FC, who have such a huge stack lineup, but all they could manage yesterday was a draw, perhaps, TT? Am I wrong? यस एंड सिर्फ एक ही पॉइंट के साथ शुरुआती डे पे वो खत्म किए थे एंड इस बार जो उनका ऑपोजिट पे रहने वाला है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस बार उनके ऑपोजिट पे हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे हैदराबाद एफसी। सो देखते हैं लाइक न्यू प्लेयर्स सो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। एंड चेन्नई एफसी की तरफ से मेनली नवीन वो डिफेंडिंग चैंपियन है, तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है आज का ये मैच देखना। सो हम लोग चलेंगे मैचअप की तरफ बहुत जल्दी। Yeah, of course. Talking about your matchup, let's not wait any further and see who's going up against who. And, well, it has to be the Goliaths going up against each other. I mean, all four of these players are so amazing. Genocide against Naveen and Varsi against Kamantikka. And then, of course, the co-op game that will be there, the game number 2. So, talking about Genocide FC, I think has been one of the veterans of the FIFA community. I think 2 or 3 years down the line, when I casted him a different tournament, he was playing for M10, and that was a team owned by Mesut Ozil, and is one of the only players of the FIFA community who has a blue tick. Just extra points for that on his Instagram. And right now, well, you also have Varsi along with him, previously playing for Bengaluru FC, a very energetic lad, always looking forward to growing, and has been streaming a lot these days, and I've been a regular viewer. Hi Warsi, big fan. But then when you talk about the opposition, you are looking at the defending champion of eISL Season 1, needs no introduction, is Naveen. And then his teammate is one of the finalists of eISL Season 1, one of the most lethal strikers in our community of FIFA, is going to be from Tikka Town, is Carmen Tikka. So it's going to be a full stacked game. And, TT, if I have to just ask you to make a really wild prediction on which club is going to win, who do you think it will be? बहुत ज़्यादा टफ है इस टाइम पे, क्योंकि दोनों ही तरफ से हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर एक्सपीरियंस लेके आते हैं। हालांकि EISL सीजन 1 के अंदर नवीन का रन बहुत अच्छा था, बट EISL सीजन 1 एंड 2 के बीच में जो एक इतने महीनों का गैप देखने के लिए मिला, वो गैप पे बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करते हैं जिनसर्ड एफसी के, तो वो भी इधर कुछ ना कुछ तो सोच के आए होंगे। एंड स्पेशली जब आप विनर होते हो या फिर आप बहुत अच्छे खेले होते हो, आपके ऊपर ज़्यादा वो स्टडी किया जाता है। सो आई थिंक इधर स्टडी करके आए होंगे एंड उसका प्रॉपर आउटकम हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। Finally, Genocide making his debut in the ISL, and has been an amazing player. Really makes those flamboyant plays and is really fearless once on the ball. And sometimes, in doing so, makes a little bit of those mistakes for which he kind of gets punished more often than not, and has to watch out for Naveen, because we know the caliber of this player. And look at that focus from both these players, maintaining that steely demeanor. And right off the bat, we've got Hyderabad FC from left to right and Chennaiyin FC from right to left in their white kit. And it is Genocide just keeping on to the possession constantly, back and forth passing in between the players. Now this went loose. Whoa! And big question and offside. Yes, that is some. The hands were raised, and I also felt Mbappe had made a run a little too quick. Yes, लेकिन इससे एक चीज़ तो पता चल चुका है कि हैदराबाद एफसी वो प्रॉपर जब जब मौका मिलेगा वो इस तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे,
डिफेंस को, बट अभी के लिए वैन डे सार 87 फिलहाल के लिए बॉल को तो अपने पास एंड अपने प्लेयर के पास देने में सफल हो चुके हैं। बट हैदराबाद एफसी, आई थिंक उनका जो परफॉर्मेंस है अभी तक शुरुआती 10 मिनट की अगर बात किया जाए, बहुत शानदार रहा है एंड प्रॉपर कंट्रोल के साथ तो खेल ही रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा डेंजरस भी दिख रहे हैं अटैकिंग थर्ड के ऊपर, क्योंकि वो शॉट्स लेने पे ज़्यादा हिचकिचा नहीं रहे। पहला शॉट इधर दिखा था सिर्फ और सिर्फ, अभी बहुत सा गेम बाकी है, फिर से मौका बनता हुआ, लेकिन इस बार जो सेकंड बॉल था वो नहीं छीन पाया जर्जीनियो एंड उसी मोमेंट पे रोनाल्डिनियो और उनके पास जाता हुआ बट किलियन एम्बापे विद द लेफ्ट विंग। नवीन की अगर बात किया जाए, कल उनका शुरुआत ड्रॉ के साथ हुआ एंड जिस तरीके से उनका सीजन 1 गया था, अगर हम लोग इधर बात करते हैं, उसके बाद शुरुआत लेके वो शायद उतना खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट मिला था उनको। देखिए इधर बेहतरीन एक का लो बॉल मौका, उसी टाइम पे शायद इधर फाउल कमिट किया गया था, क्योंकि एक ज़्यादा ही हाइट पे जंप देखने के लिए मिला एंड वो जंप अलाउ तब नहीं किया जाता जब आप अपने ओपनर के ऊपर गिर जाते हो, तो वही चीज़ इधर दिखा था। बट बेलिंगम से एम्बापे एंड इट्स अ बिग गोल। Hyderabad FC, what a turn and what a finish! राइट कॉर्नर के ऊपर इधर फिनिश करके पहला लीड इधर बनाता हुआ हैदराबाद एफसी एंड चेन्नई एफसी की अगर बात किया जाए, वो अपने क्लब को जिस तरीके से इधर आगे लेके जा रहे हैं, जस्ट इनसेन, क्योंकि नवीन उतना ज़्यादा क्लिनिकल नहीं देखने के लिए मिले हैं, बट अभी तक चेन्नई की अगर बात किया जाए, उनका परफॉर्मेंस लीथल रहा है एंड वो प्रॉपरली राइड कर रहे हैं इधर चेन्नई एफसी के ऊपर। सो थोड़ा सा इधर देख के खेलना होगा चेन्नई एफसी को एंड स्पेशली नवीन, हम जानते हैं उनके पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है एंड उस एक्सपीरियंस का जो आउटकम है वो भी दिखाने की ज़रूरत रहेगा। बेलिंगम खलीद 1-2 चलता हुआ लेफ्ट साइड थियो हर्नांडेज, बेलिंगम तो खलीद एंड बेलिंगम पोजीशन निकालने की कोशिश, बट इंटरसेप्ट हो चुका है। एम्बापे मौका था बट माल्डिनी इतना इजीली अलाउ नहीं करने वाले हैं एम्बापे को। मे बी ही हैज द मोस्ट पावरफुल पेस एंड ऑल, लाइक 99 रेटिंग है उनके पेस की अगर बात किया जाए, पेस उनके पास है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से इधर इंटरसेप्ट किया गया माल्डिनी की तरफ से वो काफ़ी अच्छा था। बट शुरुआती 30 मिनट फिक्सेस आप देख सकते हैं कि इधर चेन्नई लाइक प्रॉपर कंट्रोल के साथ फुल्ली डोमिनेट करते हुए दिख रहे हैं चेन्नई एफसी के ऊपर। Yeah, and I told you, right? He's a flamboyant player, has got a lot of moves up his arsenal. A beautiful pass, a ball roll, and a shot, Chennaiyin. That is nasty. You did Naveen really bad over there. Naveen absolutely left stunned, and Hyderabad FC, they're cruising through. And this is exactly how you're supposed to utilize your, roulette over there. I loved it. You have to do it once you're right in front of the defender just to beat him, and he did exactly that. And the way the ball just curled in, he knew the moment he had taken his shot, this was a goal. Yeah, and Van de Sar out of nowhere, उनको like Van de Sar को हिलने का मौका ही नहीं मिला था कि वो हाथ खोले पीस एंड ऑल कैलकुलेट करे, सो वो मौका ही नहीं था एंड उधर से गोल हो गया। सो 2-0 लीड एंड सामने कौन खेल रहा है? द डिफेंडिंग चैंपियन नवीन, उनको इधर 2-0 से पीछे ढकेल चुके हैं। एंड चेन्नई एफसी की अगर बात किया जाए, मेनली फ्रॉम द साइड ऑफ हैदराबाद एफसी, वो एक चीज़ तो ऐलान कर चुके हैं, मे बी ये उनका डेब्यू है, लेकिन वो खेलने वाले हैं एक चैंपियन की तरह ही। Oh yeah, I mean, had been one of my favorite players, still is, and now Hyderabad FC, they're gonna be elated with welcoming their new hero tonight. I mean, I'm pretty sure Varsi must be also happy and proud with the way Genesid has been performing, and Naveen, he is sweating at this point and needs to really, really do whatever it takes. Trying to first, just calm down a little bit, keep more of that ball possession, find those crucial passes.
and then find a way back into the game, at least score one more before the first half ends. But seems like Chennaiyin has really worked on his defense as well, because he's not letting Naveen through. कोई भी मौका इधर नहीं देना चाहिए फिलहाल चेन्नई एफसी को। बट राइट साइड से मेसी रन निकाल रहे थे, रोनाल्डिनियो, थियो हर्नांडेज कट इन करने की कोशिश था, बट पीछे गली मौजूद थे। बेलिंगम टू रोनाल्डिनियो, बट वर्जिल वैन डाइक वंस अगेन विद इंटरसेप्शन। बट फाइनली फर्स्ट हाफ इधर होता हुआ खत्म। एंड फर्स्ट हाफ के अंदर अगर प्रॉपर्ली ओवरऑल डिस्कशन किया जाए तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये हाफ तो सिर्फ हैदराबाद एफसी के लिए था मोस्टली। जिस तरीके से वो खेल रहे थे, स्टैट्स देखिए, एक सिंगल शॉट लेने का मौका नहीं दिया गया था चेन्नई एफसी को। ऑन द हैंड 2 शॉट गया, दोनों के दोनों गोल में गए। ड्रिबलिंग सक्सेस 97%, पासिंग एक्यूरेसी 93%, एंड व्हाट अ गेम फ्रॉम चेन्नई एफसी। एंड क्या खेल रही है प्लेयर, तो लाइक मैं फैन बन चुका हूँ। सिर्फ 45 मिनट्स देख के इनका मैं फैन बन चुका हूँ। I mean, of course, you know, there it has to be a reason, right? And where I talked so high and mighty about this young man, and has played internationally, is still one of those top fours that we have in the country, and did miss out on last year's eISL, but this time making sure that he rattles the champion and gives him a message that the crown is going to be mine. And once we take a look at the possession, we can clearly see, right, Hyderabad FC had just been that better team, in trying to convert a lot out of it. Every single time they had the ball, every single time they made a play, they converted that opportunity. We could see on those second and the third triggers. But then I think Chennaiyin FC sort of calmed themselves down. Naveen made a lot of good passes, still searching for those openings, as a result of which eventually the possession stats kind of favored him. But we know that it all comes down to the fact as to how many goals you score, and Hyderabad FC have just been the better team. Yeah, but I think चेन्नई एफसी जिस तरीके के एक्सपीरियंस वो होल्ड करते हैं, मे बी कोई भी टाइम पे उनका कमबैक आता हुआ दिख सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड चेन्नई एफसी की अगर बात किया जाए फ्रॉम द साइड ऑफ हैदराबाद, वो जिस तरीके से अपने पूरे गेम को, अपने प्लेयर्स को बिल्ड किया है, जिस तरीके का स्ट्रक्चर वो मेंटेन कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा पास। ये परफेक्शन ऑन द पास एंड पोजीशनिंग। ओह नो, कोई चांस लग नहीं रहा अभी नवीन के लिए। जिस तरीके से हर एक बॉक्स को प्रॉपर्ली टिक किया जा रहा है, पासिंग लाइक बटरी पासिंग हम लोग कह सकते हैं इसको। इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता मोस्टली। Oh, look at that. And even Genesis had that a little bit of a Rashford celebration over there. And, just saying it's all mind games. And Naveen, he's been read like an open book and just piercing through his defenses. Genesis enjoying his eISL debut. And so are the fans of Hyderabad FC, who are so happy about having a new hero. And Varsi also, the tension, the pressure eased off of his shoulders. But Naveen at this point, he's doing whatever it takes. Wanted to go in for that reverse elastico, the ball a little loose, but Van der Sar for the rescue. I think one of those flaws of Genesis at one certain time, his defense mostly has been really worked well upon this time, and he's doing so well. हैदराबाद एफसी अभी तक जितने भी मूव्स किए हैं, वो हर एक दूसरे से अलग थे। इसी वजह से उनको रीड कर पाना, उनको समझ पाना इतना ज़्यादा टफ हो रहा है चेन्नई के लिए। एंड नवीन की अगर बात किया जाए, वो विंग की तरफ से एक्सप्लॉइट उतना नहीं किए थे अभी तक, बट फाइनली थोड़ा बहुत दिख रहा था, लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया गया कि वो पेले के साथ एडवांस करे। बट इस बार मौका है, एम्बापे, पेले, यस, अब पेले के पास बॉल। एंड देखिए इनका डिफेंस लाइन कितना जल्दी रिकवर किया इस पूरे सिचुएशन को। एम्बापे शॉट,
रनधाड़ी Oh, बट पीछे कोई भी थे नहीं. अगर क्लोज रहते तो आई थिंक ये एक गोल हो सकता था. had it been me, I would have just taken a shot at this point. I mean, Naveen, Hmm. he's been unable to do anything. The first half we saw did not even let him take a single shot. That is how good, that is how dominating Genesid has been, and even he queued a pause. I mean, maybe just to hydrate himself, maybe at this point, or maybe get a few extra legs. Because look at the possession stats. Okay, he still does not have majority of the possession, but whenever he gets it, he makes those plays, and very much calculated, thoughtful. Did come with a playing idea, and you can see how he's been, playing a lot through those left wings. Right, has been relying heavily on that and has Hmm. been winning a lot of those balls over there, and all those goals also coming out. And Naveen is just left stranded at this point. I don't see Naveen making a comeback. I mean, well, the king, he's definitely seems like has gotten too old, maybe, because a lot of players are coming for his crown. Yesterday we saw Charanjo, today we are seeing Genesid. What's going on, Diddy? आई डोंट नो एंड नॉट ओनली जेनेसिड इसके पहले भी हम लोगों ने वंशज को देखा था क्या शानदार उन्होंने परफॉर्म किया Oh, पिछले yes. मैच पे एंड ओवरऑल अगर बात किया जाए तो विकी भी थे फ्रॉम द साइड ऑफ एटी के मोहन बगान सो बहुत ही बेहतरीन स्किल सेट के प्लेयर्स जो है वो हम लोग इधर नजर आ रहे हैं इस सीजन के अंदर एंड बहुत टफ होने वाला है ये सीजन फॉर श्योर वो चाहे पिछले सीजन के विनर हो उनके लिए या फिर कोई वेटरन हो इस पूरे कम्युनिटी को उनके लिए भी क्योंकि इस बार जो न्यू फेसेस हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इवल साबित हो रहे हैं अपने ओपोनेंट टीम के लिए सो थोड़ा सा इधर देखे खेलना होगा 3-0 के साथ किसने एक्सपेक्ट किया था आपने जब मुझे पूछा था लाइक मेरा प्रेडिक्शन क्या होने वाला है मैंने थोड़ा 50-50 आंसर किया था बट इधर देखिए ओ माय गॉड The diplomacy being shown, and now you can be certain, right? But yes, well, for the fans of Chennaiyin FC, a little bit of a copium. Don't forget that Tikka is still there, and he's one of the hot favorites to win against Varsi. So that could happen. But Genesid on another attack, so calm. Naveen not pushing through, not making those unnecessary tackles over there. Just making sure he's got the players marked, and again a run through the right wing. But this time Theo Hernandez was there for the rescue. Now coming back to what I was trying to say. Now Varsi, after that eISL season 1 loss, he promised himself that he would be grinding so hard that the next season he comes back in would be a completely whole different version, a revamped version of Varsi. I've seen him a lot, sweating out on the stream, raging on his opposition, always accusing them of ratting. या I know there's this term ratting where completely got full try hard, use all the meta cards and everything. So let's see when he goes against the best in the business, what is he gonna do? Will definitely be a sweaty match for him. या बट उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो थोड़ा बहुत जो है फिलहाल के लिए तो कम करने वाले हैं जिस तरीके से जेनसेट की अगर बात किया जाए उन्होंने जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया आई थिंक जो टेंशन उनके ऊपर था या फिर जो टेंशन लेके वो खेलने वाले थे वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका होगा एंड को मैच बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी सिर्फ आखिरी 10 मिनट के अंदर 3 गोल्स होना वो पॉसिबल लग नहीं रहा बट एक गोल हो सकता है हैदराबाद एफसी के तरफ से बार 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 इधर मौका बनता जा रहा है लेकिन एक भी शॉट अभी तक चेन्नई एफसी की तरफ से नहीं दिखा है वो चाहे बात की जाए फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ के भी अंत तक हम लोग पहुंचने वाले हैं एंड अभी तक हम लोग को शॉट नहीं दिखा चेन्नई एफसी की तरफ से एंड चेन्नई एफसी के नवीन के लिए आई थिंक ये एक न्यू एक्सपीरियंस होगा जिधर वो ओपोनेंट्स के साथ इस तरीके से खेलते हैं लेकिन अभी उनके साथ खेला जा रहा है जिधर उनको मौका नहीं मिल रहा शॉट कनेक्ट करने का It's just not a victory, right? It kind of reminds me of that Charanjot Saranch matchup, and both the Saranch being one of the ex Chennaiyin FC players, both the champions. Well, they're facing so much trouble, so much of competition. Another beautiful chance almost being created, but Genesid is not gonna feel bad about that because he knows the job is already done. It's done and dusted, and he's on the verge of winning it all in the next 1 minute. Of course, the final whistle
will blow, and just a little bit of that stoppage time also being added on, just a mere minute. And in fact, Naveen looking for that little bit of a consolation goal, can find it finally, Oh, at least manages to take a shot before the final whistle. And there you have, the secret for Genocide, I think, has been all about keeping himself hydrated, because after every single goal, he's been taking a sip of water and is coming back, scoring a few more goals. And that is how, ladies and gentlemen, he's managed to win this game. yeah, and with ऑल सिप्स आई थिंक उनको एक चीज़ जो है वो रिमाइंड हो रहा था कि उनको काम रहना है, कूल रहना है, एंड उसी के साथ-साथ उनको जो मेनली करना है वो है ऑब्जर्व करना नवीन को, एंड आई थिंक वो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया, क्योंकि नवीन जो-जो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे शुरुआत से, उसको प्रॉपर्ली वो ओपन बुक की तरह रीड कर रहे थे, एंड उसके बाद उसका काउंटर निकल रहे थे। एंड देखिए इस जगह पे बहुत कम ही ऐसे शॉट्स भी देखने के लिए मिला, क्योंकि सीज़न 2 के अंदर हम लोगों को वैसे शॉट्स दिखे नहीं है। बहुत टेक्निकल है प्लेयर्स, जिधर से मिस एकदम भी नहीं हो सकता, कुछ उस सिनेरियो पे जाके ही ज़्यादातर शॉट लेते हुए दिखे, Oh, बट ये look at गोल, that. हाँ, ये गोल कुछ अलग था। This was nasty. And if you felt like the second goal was just enough, just wait. Oh, that was indeed the third one, right? My apologies. That was so nasty, to be honest. And oh, Genocide against Naveen. 3-0 was the scoreline, but now it's time for the co-op game. So Genocide has proved his individual mettle. He knows he's here to win. He's already, made a very loud and bold statement. But how good is he with Varsi? Because Naveen and Karmantika, we've seen them playing together as a co-op unit. Yesterday, we did see a lot of hiccups over there, but they knew exactly the areas that they need to work on, and had a day, and will now finally figure out, and hopefully will recover, because if Chennai FC lose this one, then TT, there'll be nothing remaining to salvage. या एंड जिस तरीके से अभी तक जेन सीट देखने के लिए मिले थे, एंड उस हिसाब से देख के लग रहा है कि बहुत टफ हो सकता है से विद वॉटसी की, अगर क्या जैसे कि आप भी उनके स्ट्रीम देखते हो, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, लाइक इन इस प्लेयर के अंदर वो जो मेहनत के चाह है, लाइक वो दिखाते हैं, वो अपना रियल जो है वो स्ट्रीम के अंदर भी दिखाते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं या फिर क्या सोच रहे हैं एंड ऑल। सो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो भी तैयार है इस बार। हालांकि अपोजिट साइड पे करमन टिक्का रहने वाले हैं, एंड जब वो बहुत बहुत ज़्यादा शानदार प्लेयर है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आज के दिन पे शायद थोड़ा पल्ला भारी रह सकता है हैदराबाद एफसी के लिए, क्योंकि जिस तरीके का पहला मैच देखने के लिए मिला, आई थिंक वर्सी एंड चेन्नई दोनों का जो गेम खेलने का जो तरीका है या फिर द वे ऑफ प्लेइंग थोड़ा सा मैच करता है, तो उस जगह पे मुझे लगता है कि सिनर्जी बहुत अच्छा शायद देखने के लिए मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ पासिंग एंड थ्रू बॉल्स के हिसाब से। बट लेट्स सी, लाइक चेन्नई एफसी क्या कमेंटी का, एंड अगर हम लोग इधर बात करते हैं तो दोनों ही फाइनलिस्ट इधर खेलने वाले हैं, एक जीते थे, एक हार गए थे अनफॉर्चुनेटली, बट शुरुआत जो है जो विनर प्लेयर के लिए तो नहीं हुआ उतना खास, बट लेट्स सी कोऑप में क्या होता है। Now, this time, I think I've been loving that little shuffle between all these clubs, right? And you can see that it's making a lot of difference. Now, on pen and paper, Naveen and Karmantika is a recipe for destruction, right? It Yeah. is a recipe for carnage. It is a recipe for retaining the title for Chennai FC. But that so far hasn't been the case. Their first matchup was a draw against Mumbai City FC. And the big thing is, one important point that I need to highlight, that even the players of Mumbai City FC, they were also having their debut in eISL. Now, all these debutants are causing so much problem for Naveen, and I just can't wait. So, maybe one day when we get in touch with Naveen, call him up for an interview, then maybe we get to ask him, because right now the way the players have been advancing, it's looking so tumultuous for Chennai FC at this point, and they need to recover at this point. फॉर श्योर, एंड आई थिंक यही एक गैप है जो कि आ रहा है, क्योंकि देखिए जो डेब्यू कर रहे हैं शायद लाइक बाकी टूर्नामेंट्स पे तो वो खेलते होंगे, लेकिन
ईआईएसएल के अंदर ये वो पहली बार खेल रहे हैं, तो उनको शायद उतना अच्छे तरीके से स्टडी नहीं किया गया होगा, या फिर स्टडी किया भी गया होगा तो उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है प्लेयर्स के पास। तो ये एक कारण हो सकता है जो कि एक आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है। बट बात कर ही रहे थे एंड उसी के बीच में कोप मैच होता हुआ शुरू फ्रॉम द साइड ऑफ हैदराबाद। हम लोगों को जेनेसिड जो कि पिछले मैच के एक ग्लोरियस विनर निकल के आए, बट उसी उन्हीं के साथ इधर वॉर्सी जॉइन करते हुए दिख चुके हैं। ऑन द अदर हैंड हम लोगों को नवीन के साथ जॉइन करते हुए दिखे हैं टिकटॉन। सो ऑब्वियसली इधर बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मैचअप होगा। अभी के लिए तो शुरुआती 3 मिनट के अंदर बॉल कंट्रोल प्रॉपर्ली चेन्नई एफसी के पास ही देखने के लिए मिला। Yeah, I think at this point, Chennai and FC have a point to prove, right? And they need to do whatever it takes to kind of bounce back into this game. Still, nothing. A lot of things aren't lost, right? Like I said, a little bit of a copium for all the Chennai FC fans is the fact that they have to go on to win this game and the individual game of Tikka after that. And Kaman Tikka is an ever reliable player. He has been in that situation multiple times. I've seen him recover from 3-0 deficits also. No, he's got that much caliber. But look at Hyderabad FC. Oh, Oh, a skill move, little too many. I mean, I think that step over was perfect the first time, but the next one, that is where it all got messed up. Had he just taken the shot from there, TT, I think it was a goal. या मे बी चांसेस तो बहुत हाई थे, बट उन्होंने लिया नहीं तो अभी कह नहीं सकते। बट देखिए अभी सीरीज स्कोर तो ऑलरेडी आगे है हैदराबाद एफसी, बट जर्जीनियो जर्जीनियो से पास निकालने की कोशिश था, लेकिन बीच में इंटरसेप्ट होता हुआ, क्योंकि देखिए इधर कोई भी और प्लेयर होता वो भी इंटरसेप्ट कर लेते अगर उनका स्किल मूव टू स्टार या फिर 3 स्टार भी रहता, क्योंकि वो पास ही गलत था फर्स्ट टाइम। तो ये गलत पासेस या फिर जो मिस पासेस है वो नहीं कर सकते, नहीं तो जो लीड इधर आया है वो लीड गवा भी सकते हैं। थियो हर्नांडेज टू रोनाल्डो, जगह बनाने की कोशिश, लीड कोशिश था रोनाल्डो को एक बार फिर से खिलाने की, लेकिन उसी जगह पे वैन डाइक प्रॉपरली इंटरसेप्ट करते हुए तो काउंटर पे जाने की कोशिश तो चल रहा है हैदराबाद की तरफ से, बट ये जो पासेस है वो पासेस प्रॉपरली नहीं निकाल पा रहे हैं। सो ये इनके लिए थोड़ा बहुत कंसर्निंग चीज, कंसर्निंग पॉइंट हो सकते हैं इस गेम के अंदर। I mean, at this point, I think has been a decent start for both these teams, I must say, right? Both these players are creating chances. Hyderabad FC on one corner, and then you've got Naveen and Tikka on the other. And last time, the one thing that I really miss about last time was all the players. Every single day was a studio event, right? All the players were together. We could see them chatting with one another, living in the hotels, and yeah, nostalgic memories. This time it's a little bit different, but right now Chennai FC on the attack, looking for that cutback, and a little bit ahead is where Messi went along and could have been controlled a little better, I must say. But now this is again a second chance been given, and wanted to just pass it to R9, but that also failed. इधर जो भी लाइक करने की कोशिश किया जा रहा है फिलहाल के लिए उतना सक्सेसफुल तो हो नहीं रहा, बट इस गेम के अंदर मेनली अगर बात किया जाए जो क्रिस्पीनेस हम लोग सोच रहे थे वो क्रिस्पीनेस अभी तो नहीं दिख रहा। बट देखिए राइट साइड से हकीमी रन निकाले जरूर थे एंड एम्बापे के लिए बॉल था, बट इंटरसेप्ट होता हुआ दिखा राइट साइड से। मेसी टू एम्बापे, एम्बापे के पास 199 पेस मौजूद जरूर है जिसके थ्रू वो निकल सकते कोई पोजीशन से। बैकहिल करके पास दिया गया था रोनाल्डिनियो को, एंड ये एक डिफरेंस क्रिएट हो सकता है इस जगह पे। बात करते करते पहला गोल आता हुआ चेन्नई एफसी की तरफ से, एंड चेन्नई के फैंस अभी के लिए बहुत खुश हो गए। ओह, Wow. ये कुछ न्यू था। Yeah, the crabby celebration is, I think, what I would call it. But Chennai and FC so far, definitely look at the possession stats, have been the better team. And if you've got a finisher like Arman Tikka in your team, and you're ought to score, and huge sigh of relief where Hyderabad FC need to take a little bit of a pause, need to contemplate what is going on over here, and need to think once more. Like,
where were those mistakes being made? How could the right back side of their area be opened up so much by their left winger of Chennai FC? And there you go, Ronaldo making no mistake, and beautiful, well synchronized play. And I think it was kind of a little bit of a, it felt like a little player lock. In fact, for whoever player is that teal color from Chennai FC, and it looked like a Tikka goal, but we'll know about that a little later. This time again, Chennai FC wanted to make it two, and the process is still on with Ronaldo. Had he, oh, just missing out one skill move, and could have made all the difference too. या एंड वो एक मूव बहुत बहुत ज़्यादा शानदार था मेनली वो बैक हिल से क्रिएट होना शुरू हुआ था वो बैक हिल अगर प्रॉपर नहीं रहता थ्रियो हर्नांडेज की तरफ से तो रोनाल्डिनियो को उतने एडवांस पोजीशन पे बॉल नहीं मिलता शायद रोनाल्डिनियो भी उधर आगे नहीं बढ़ते फिर रोनाल्डो के पास नहीं जाता तो क्रिएशन के पीछे मैं तो इधर कहना चाहूँगा वो पास था जो कि बैक हिल किया गया था थ्रियो हर्नांडेज की तरफ से बहुत शानदार एंड इसी वजह से हम लोग कल भी डिस्कशन कर रहे थे कि एक सिंगल पास आपको एक मैच जिता सकता है एक मैच हरा सकता है ऑब्वियसली अगर वो डिफरेंस सिर्फ एक ही गोल का हो तब उससे ज़्यादा होगा तब तो नहीं लेकिन इस बार जो है वो शुरुआत काफ़ी अच्छा रहा चेन्नई ने की तरह से कुछ भी नहीं हो रहा था उससे अचानक से एक ग्लोरियस मोमेंट लाइक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस हम लोगों को देखने के लिए मिला एंड एक गोल का जो लीड है वो मिल चुका है बट हैदराबाद ये कोऑप उनका उतना खास जा नहीं रहा जितना हम लोगों ने सोचा था जो क्रिस्पीनेस आएगा जिस तरीके से जेनोसाइड परफॉर्म किए थे उसके बाद वर्सी जिस तरीके के प्लेयर हैं वो देखते हुए उतना क्रिस्पी नहीं है बट इस बार गलती होता हुआ मार्टिनी की तरफ से मौका भी बन गया था क्या ये गोल हो सकता है लेकिन नहीं गलत दिशा पे टर्न कर गए मेंबर Yeah, a little bit of those mistakes and being punished. And this time Mbappe, he's broken free with the run. Has a lot of options this time given towards Ronaldinho as the second one also comes in. A very nice synchronized play. And Chennai FC find themselves right back. And yes, they might have lost that individual battle, but proving that they've worked on their co-op game. Definitely did practice that a lot. And clearly, it is evident that they have improved. And now Hyderabad FC scratching their heads at this point. And Varsi, this is not how he would have wanted to start it off. Look at that beautiful pass initially from Theo towards Ronaldinho. And once it went towards R9, we knew it was a goal. Beautiful angle being created. Another run when we saw that second goal coming. Look at that. Beautiful, well-delivered pass, and Mbappe, that little, explosive pace coming in from this play, just beating the defenders. We know this card is a cheat code to the game, and sadly, it's available for everybody, so everybody can use that. And we know, if you get Mbappe in such position, if you're making those runs, it's nearly impossible to catch up to him. बिल्कुल उधर से आप कैचअप नहीं कर सकते क्योंकि 99 पेस के साथ प्लेयर्स बहुत कम ही है मेनली अगर बात किया जाए विंटर वाइल्ड कार्ड पे एक प्लेयर के ऊपर है एंड उसको छोड़ के अभी के लिए जो है मौके ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं हैदराबाद एफसी की तरफ से तो जो शुरुआत हुआ था इधर लीड के साथ वो उतना कुछ खास नहीं रहा बट लेट्स सी क्या होता है इसके बाद नेक्स्ट हाफ पे आई थिंक थोड़ा बहुत डिस्कशंस तो अभी चल ही रहे होंगे क्योंकि जो कॉल आउट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोऑप के अंदर कि आप पास किसके साथ किसको खिलाओगे क्या आपका कोऑर्डिनेशन रहेगा बट फॉर्मेशन वाइज दोनों का ही फॉर्मेशन सेम है लेकिन इन गेम जाके जो चेंजेस हो रहा है इधर टैक्टिकली वो बहुत बहुत सारा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है दोनों ही टीम्स के बीच में You know what, TT, just before this, we saw the possession stats, right? We could see clearly one thing is Hyderabad FC are not working well as a unit because they're not able to retain the ball. Every single time you did see those long lines, being drawn. And if the production could bring that stat up once again, we could explain that even better in a better manner because I felt that, Chennai FC as a co-op unit, the possession one, if you could have those possession stats, there you can see when all those long bars were popping up, we could see how beautifully Chennai FC kept their run on.
and that is something that Hyderabad FC have been unable to do so, right? Keeping the ball on the players, keeping the passing game on. Even Genesis in his individual matchup, he did not keep a lot of possession, but he was really clinical. But now when he knows that he's got to work in tandem with Varsi, then he's got to figure out a way around it. Because it's all about teamwork, right? You might be individually better, but if you're not working well as a team, then eventually your club is going to suffer. So that being said, we are on with the second half. Let's see if Hyderabad FC can turn the tables around, because today, TT, we have seen that happen already once. या बिल्कुल एंड वो क्या एक बार फिर से हम लोग को होता हुआ दिखेगा या फिर इधर कुछ कमबैक आएगा, वो चीज़ देखने की ज़रूरत है। बट एज ऑफ नाउ ज़्यादा मौके नहीं थे, बट इस बार थोड़ा-सा बेहतर दिख रहे हैं। इस बार का जो शुरुआत हुआ है पहले 7 मिनट सेकंड हाफ का, थोड़ा बेहतर दिख रहे हैं इधर ज़रूर। हैदराबाद एफसी फिलहाल के लिए बॉल कंट्रोल उनके पास है। जर्जीनियो टू हकीमी एंड जर्जीनियो को इधर थोड़ा-सा ड्रॉप बैक करके खिलाने की कोशिश बेलिंगम। राइट से इधर मौका बन सकता है। वैसे मुझे लगता है कि कुछ सेकंड्स के लिए ना पीछे चले जा रहे हैं हैदराबाद एफसी। उनको वो अगर कुछ मिली सेकंड्स पहले ये पास निकाल देते एम्बापे के लिए, एम्बापे एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे ऑलरेडी होल्ड कर रहे थे जिधर से एक गोल मिल सकता था। बट शायद थोड़ा जो है वो क्लिनिकल होने की कोशिश कर रहे हैं कि एकदम फुल परफेक्शन के साथ ही जाएंगे जब भी जाएंगे, तो उसकी वजह से शॉट्स भी नहीं आ रहे। Well, this looked like a promising attack when initially was set up, and I felt, on the counter they could maybe go on and try to score. And one more thing, Varsi, he's been hitting the gym. Could see those biceps popping out. Clearly, have been working out, and needs to also work out inside the game, because we yet to see his individual game, but so far Hyderabad FC have been a little bit lousy. You could see, you know, both these players, they are starting to sweat over here, and this is what I was talking about. Look at this. Hyderabad FC barely managing to keep the a ball, and every single time, look at those longer markers here, right? This is how they've been making their plays, and they've been better as a team. Where Hyderabad FC need to make a little bit more synchronized plays, and I think somewhere I think it's fair that it's their first co-op game together, because Chennaiyin FC's co-op game yesterday wasn't that great either, but they've improved just within one night. एंड आई थिंक मुझे लगा था कि और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है, बट अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ फिक्सेस। लाइक आपको क्या लगता है कि इधर क्या गलतियाँ हो रहा है हैदराबाद एफसी की तरफ से अभी तक की, जिसके वजह से उनको अभी तक गोल्स नहीं मिले? क्योंकि चांसेस तो मुझे बहुत सारे दिखे थे, जिधर से पास अगर खिलाते तो मे बी इधर जो स्कोर लाइन था वो अलग हो सकता था। Wait, just hold on a second. A very crucial defense there being showcased. I think was maybe Theo Hernandez, or maybe it was somebody else, the centre back perhaps. But regardless, let's move ahead. And getting back to your question, I think TT, I really felt that Hyderabad FC, yes, they're creating chances, but like I said, that synchronization between these two players is clearly missing. A huge open area, heel to heel, Mbappe taking that shot, but Van der Sar being present over there, making sure that it only ends up as a corner and nothing more than that, going for that cutback, but Hakimi thwart it away for yet another corner. So Hyderabad FC basically have to keep their midfield a little bit stronger, have to keep shuffling the ball, get a little bit confidence, and understand the pace of each other's runs. And if they can somehow manage to do that, I see a goal coming for them. But nice shot, foiled. बहुत बहुत शानदार ये शॉट था, लेकिन इतने दूर से लाइक वैन डे सार को आप बीट नहीं कर सकते। इसी वजह से गोल तो इधर हुआ नहीं है, लेकिन 2-0 के साथ चेन्नई एफसी फिलहाल के लिए बहुत ही अच्छे खासे लीड पे बने हुए हैं। बट थियो हर्नांडेज विद लेफ्ट साइड कंट्रोल बहुत ही अच्छा। बट उसी सेम एरिया पे अगर हम लोग बात करते हैं केडीबी की, केविन डे ब्रुयने बहुत कम टाइम हम लोग को उतरते हुए दिखे, एंड अगर आते हुए दिखे भी है तो वो एज अ सब्स्टिट्यूट आते हुए देखने के लिए मिले हैं।
बट क्या वो मैच विनर की तरह परफॉर्म कर पाएंगे आज, क्योंकि हैदराबाद के लिए ज़रूरी है कि वो इस गेम के अंदर एटलीस्ट कम बैक करें, क्योंकि शुरुआती में जो लीड उनको मिला था, अगर ये हार जाते हैं सो वो लीड पूरा ही चला जाएगा एंड पूरा सब कुछ अभी सेम पोजीशन पे आ जाएगा। बट पहले व्हाट अ पास एंड फाइनली इधर पहले से कन्वर्जन आया। बात कर ही रहे थे उसी टाइम पे हैदराबाद एफसी जो 2 गोल का लीड था उसको कम करके 1 गोल का डिफरेंस पे लेके आ चुके हैं एंड मे बी ये और भी ज्यादा कम होता हुआ दिख सकता है। अगर ड्रॉ भी करके जाते हैं फिर भी एक एडवांटेज में रहेंगे हैदराबाद। Oh yeah, for sure. You know, no second thoughts about that. And this is exactly what we wanted to see from Hyderabad FC. Those good passes being made. You know, those important. Just what do you call that? Piercing, the defense piercing passes to be made, and that was evident. And if we could have a few more of those plays, because now barely just 10 minutes remain, and Chennaiyin FC, they have been hit by lightning, and Hyderabad FC have to keep going on with the momentum that they've just built up for themselves, because it's always better to be the ones chasing, because you'll be always on your foot, on your toes rather. And now a good chance that possibly could be converted from that right wing. You've got Theo Hernandez trying to make an entry, but yeah, the passing lanes were blocked, and now Chennai in FC will get a chance to counter attack. And before I could even end my sentence, the ball has been stolen twice. जी हाँ and, फिलहाल के लिए तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन चलता हुआ दिख रहा है। पिछले गेम पे भी काइंड ऑफ वैसे सिनेरियोस बहुत देखने के लिए मिले थे, लेकिन जेनेसिड एफसी की तरफ से हम लोग को कन्वर्जन रेट बहुत हाई देखने के लिए मिला। दैट्स वाई अभी भी इधर अगर बात किया जाए तो हैदराबाद एफसी की तरफ से लीड मौजूद है, लेकिन और सिर्फ 4 ही मिनट ये लीड रह सकता है अगर कोई भी गोल नहीं आता इधर हैदराबाद की तरफ से। तो देखते हैं, लेट्स सी। केविन डे ब्रुयने टू लीड से इधर फेक किया गया था, डमी किया गया, बट देखिए इधर एक क्रॉस रखने की कोशिश, लेकिन फिर से डिफेंसिव ब्रिलियंस एंड बॉल गया था चेन्नई एफसी के पास, लेकिन वर्जिल वैन डाइक बॉल छीनते हुए दिखे एंड बॉल स्टील करने के बावजूद जो पासिंग है वो हम लोगों को ऑन पॉइंट नहीं दिखा। लास्ट मोमेंट, लास्ट अटैक एंड वो भी नहीं हो पाया पॉसिबल एंड आखिरी मिनट पे एक येलो कार्ड कंसीड करते हुए रोनाल्डो। It's okay, right, TT? I mean, Yeah. Chen, Chennai FC, regardless whatever the outcome, why is this game not ending? Why is that final whistle not being blown? Hyderabad FC, this is their last attack, last attempt in trying to make something really come into play. Are going to let Virgil van Dijk go for a short pass, and why? I was kind of taken aback. Why would they take such an effort, such an attempt like this? And there you go. Feels like Genesid's first game heroics have been washed off by beautiful display of FIFA by Naveen and Kamuntikka in that first half. Second half, we saw, Hyderabad FC trying to get better, instantly improvising, but even scoring a goal, but wasn't enough, because they still managed to pull through with that 1 goal lead up ahead. And Hyderabad FC tonight, they know what homework do they have. And look at this goal. This was so beautiful. I think it was indeed a player lock into a goal. What a beautiful play by these lads. या बहुत बहुत ज़्यादा शानदार प्रॉपर कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिला दोनों के बीच में एंड ये जो गोल था, ये इस गोल को कह सकते हैं 100 में से 100 मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर एक बॉलिंग गोल था जो कि हम लोग को यूजुअली देखने के लिए मिलता है जस्ट हेडर के साथ। बट उसके बाद हैदराबाद एफसी की तरफ से बहुत बहुत सारे कोशिश थे। इधर जो ये फ्री किक रखा गया था ये भी कहीं ना कहीं ऑन पॉइंट तो था, बट वैंडे सर हम जानते हैं इतने दूर से जो शॉट्स है वो यूजुअली वो मिस नहीं करते। बट ये एरिया पे एम्बापे टू पेले एंड उसी के साथ डायरेक्टली गोल के साथ फिनिश किए एंड इसी वजह से डिफरेंस जो है वो तो कम जरूर हुआ, लेकिन मैच का जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं हो पाया। सो आखिरी मैच विल बी द डिसाइडर कि ये ड्रॉ होगा, चेन्नई एफसी जीतेगा या फिर हैदराबाद एफसी, क्योंकि आखिरी मैच के ऊपर सब कुछ
डिपेंड करने वाला है। वारसी एक तरफ, दूसरी तरफ रहने वाला है टिक्का टाउन। एंड कमन टिक्का की अगर बात किया जाए एक्सपीरियंस वाइज, मे बी इधर वर्सी से थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, बट ऑन द अदर हैंड हम लोगों ने देखे है लाइक एकदम क्लोजली कि वर्सी कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे थे eISL सीजन 2 के लिए। सो सब कुछ कहने के हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा इस गेम के ऊपर। You know, Watsy was definitely grinding, but that was on stream. Karmantika, well, he hasn't been streaming, but he has been grinding a lot as well. And he's feared by a lot of these players. And now, one good thing, folks, is we have a game at our hands, right? Because it all started with Genocide and his heroics won his individual battle against Naveen. But now Chennaiyin FC have managed to pull through in that co-op phase. They've survived that horrors and they have won that game, which means whoever, ladies and gentlemen, is going to win this matchup, that club is going to walk off with 3 points. And we hope this does not end as a draw, and because that would be disheartening. I want it to be decisive. I want a certain team to go till the end and just go out there and win it. I mean, I don't have any favorites over here. I love both these lads. Both are very hardworking, very amazing. Because even Karman Tikka, I still remember he went through such a tough phase of his career last time, and there were situations and things that he could not avoid in his journey in his eISL. A lot of personal reasons for which he had to take a little bit of a pause, during season 1. But when he came back, he knew that he had to fight for something big, and he fought and went down till the end, and still came out as a warrior, as a finalist. And now Varsi did not make it to the playoffs, but he knew the scars have not healed for him. And now is the time where he has to prove his mettle individually. How much has he improved? That is the storyline, ladies and gentlemen. Both these players have that hunger inside of them, but who's more hungrier to win about? Who is going to take the final laugh, TT? I mean, what are your predictions about this game? नो प्रेडिक्शंस येट एंड इस टाइम पे प्रेडिक्शन करना आई थिंक मुझे लगता है कि इस गेम का जो हाइप है वो मे भी थोड़ा बहुत किल कर सकता है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए जैसे कि आप कह रहे थे कि पिछले सीजन उतना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उतना खास परफॉर्मेंस नहीं था शुरुआती स्टेज पे, लेकिन अगर इस साल के कुछ टूर्नामेंट्स की बात करूँ तो कमेंटी क्या की तरफ से फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा है। एंड वो फॉर्म को लेके वो आएंगे eISL सीजन 2 के अंदर। एंड सेम विथ वर्सी की अगर बात किया जाए, उनके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, एंड वो जस्ट कहने की शुरुआती स्टेज के ऊपर हम लोग कह सकते हैं। सो वो बहुत कुछ इधर लेके जा सकते हैं। बात करते करते हो चुका है शुरू, एक तरफ वर्सी, दूसरी तरफ टिक्का टाउन। एंड देखिए शुरुआती स्टेज पे एम्बापे विथ स्पेस आगे दौड़ते हुए, प्लेयर लॉक किया गया, रोनाल्डो गोल हो सकता है, हो चुका है। जस्ट फ्लैश मोमेंट, 3 seconds, like 3 minutes, एंड चेन्नई एनएफसी 1-0 लीड ले चुके हैं। एंड दिस इज करमन टिक्का। वाह, क्या शानदार शुरुआत दिया चेन्नई एनएफसी को। The Tikka town is here, baby. And इसी की बात करते हैं। करमन टिक्का, ये एक ऐसे प्लेयर है, always reliable, and could get the second one, but TT, I told you, right? I told you, this is one of those players that you really need to fear, and Varsi has to calm his nerves. He understands that he has already conceded one, need not concede anymore. Instead, focus on somehow getting back inside the game. And right now the way Tikka is playing, he does not want to give the ball away at any cost. बट आई थिंक वर्सी बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए हैं, एंड वो उनके मूव से थोड़ा बहुत पता चल रहा है। पासिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोगों ने देखे इसके पहले भी शुरुआती में गोल कंसीड करते हुए, बट उसके बाद कम बैक करने के लिए भी आपके पास बहुत टाइम होता है। सिर्फ आपको चाहिए कि आप कामली पूरे सिचुएशन को संभालो। आई थिंक वही चीज़ करने की ज़रूरत है। हैदराबाद एफसी के तरफ से पॉज के लिए क्यों किया गया है। सो बॉल जब भी बाहर जाएगा ग्राउंड के, तब एक पॉज आता हुआ दिखेगा, शायद थोड़े बहुत चेंजेस
दिख सकता है, विथ इंक्रीज कर सकते हैं मे बी, क्योंकि जो रन्स है इधर एक बार फिर से थ्रू किया गया रोनाल्डिनियो। कोशिश था Oh, बीट करने की वेंडे सार को, बट वो हो नहीं पाया। I thought he would go for a ball roll or maybe, या watching Karmantika, he finishes nine out of 10 times, right? And he makes sure that he scores a goal. But this is a player lock for Varsi. Let's see on the counter, what can he produce from this attack? Being really calm, really collected. I think he was trying to trigger runs for that German cross, right? We did see one of those players making that run for it, but eventually he could not get through with it. Lack confidence, but this looks like to be a promising chance. Just has to be playing around with the defenders, trying that to do that. But out of every player, got beaten by Messi, who's got one of the weakest defensive stats, I guess. या लेकिन उसके बावजूद ये नहीं कि जो है लाइक मेसी की तरफ से बहुत ही अच्छा फिलहाल के लिए परफॉर्मेंस दिखा, बट चेन्नई एफसी की अगर बात किया जाए शुरुआती में जो गोल उनके पास आ चुका है तो ह्यूज लीड रहेगा, बट थियो हर्नांडेज के लिए क्या शानदार आउटफुटेड एक पास रहा फ्रॉम वैन डाइक, एंड उसी से फिर से एक बार मूव बनता हुआ रोनाल्डो। कोशिश था कि वो स्टेप ओवर करके बॉल बीच में से निकाल के लेके चले जाए, लेकिन वो अभी के लिए सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर से वॉर्सी की तरफ से बिल्डअप चलता हुआ थियो हर्नांडेज लेफ्ट साइड पे बहुत आगे एडवांस कर चुके थे। हली टू बेलिंगम, बेलिंगम से रोनाल्डिनियो टू रोनाल्डो, मौका बन रहा है। जार्सिनियो भी थे लेफ्ट साइड पे, लेकिन कुछ खास अभी के लिए आउटकम आया नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं हैदराबाद की तो शॉट्स नहीं दिखा। फिर से एक बार रोनाल्डिनियो के पास बॉल, बट ये था ऑफसाइड। सो Yeah. फाइनली जो शायद इधर पॉज के लिए क्यों किया गया था 10 मिनट के आसपास, वो 28 मिनट पे जाके पॉज हुआ है, एंड इधर चेंजेस की सख्ती से जरूरत लग रहा है, क्योंकि हैदराबाद एफसी वो शायद अभी हाई लाइन के साथ नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके के लॉब पास निकाला जा रहा है चेन्नई एफसी के लिए, वो इतना ज्यादा हाई लाइन खेलेंगे तो मुश्किल हो सकता है। Yeah, I think they really have to watch out for that. And for this matchup going on, Hyderabad FC and Chennai FC, the decider matchup, a 1v1 between Carmen Tikka Wow. and Varsis is a Wow. golden opportunity. He needs to score, and he does that. Finally sweating his way through and finds an equalizer. Beautiful pass, this piercing through the defense, and Karman Tikka is left baffled, surprised at what just hit him. And Varsi, well, I do not know the tweaks that he made, but surely has worked out, and this is not gonna work out anymore. Varsi has made that message clear. Those long passes that Karman Tikka has been relying on, those German crosses, whatever you may call it, well, he's got to find another way out. एंड वन मोर टाइम, पहले गोल आने के बाद बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव Wow. होते जा रहे हैं एम्बाप्पे। शॉट लेने की कोशिश था, लेकिन थोड़ा सा और जो है वो इधर एम्बाप्पे को लेके बॉल को कंट्रोल रख सकते थे, बट अब देख सकते हैं कि गोल पूरा जो मेंटल कंडीशन, लाइक काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं कॉन्फिडेंस, वो इधर चेंज कर देते हैं। इतना ज्यादा प्रेशर में खेल रहे थे वो सी, बट पहले गोल के बाद अभी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। Well, let's see what's about to happen. And right now, after such a solid start for Karman Tikka, he's certainly lost his momentum. And Varsi, after that equalizer, is looking really sharp, really poised, really deadly, to be honest. And wow, these are really defense splitting passes. And he needs to find a few of it more on these occasions. Now, just trying to kind of figure his way out. He's taking his time, which is absolutely fine. As long as you keep your possession on the ball, as long as you keep shuffling, as long as you keep changing your sides, keep Karman Tikka into thinking what you're about to do. Which direction are you going to attack from? And that is the way. Maybe he could get a lead over Karman Tikka just before the end of first half. या क्या ही शानदार शुरुआत था, लेकिन इस बार जो कमबैक है वो वार्सी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहता हुआ। एज ऑफ नाउ राइट हैंड साइड पे रोनाल्डिनियो रन निकालने की कोशिश तो थे, बट उनको आई थिंक या उनको पास नहीं दिया गया। बेलिंगम के पास था, एंड उसी के बीच में बचता हुआ हाफ टाइम का विसल
एंड टीम हैदराबाद एफसी आई थिंक जो कमबैक करते हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे खासे लेवल तक पहुंच जाता है एंड वही चीज इधर दिखता हुआ हैदराबाद एफसी की तरफ से, बट ऑन द अदर हैंड चेन्नई एफसी उनको भी हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि कर्मटिका वो प्लेयर है जो कि इस गेम के शुरुआती 3 मिनट के अंदर गोल स्कोर किए थे एंड ये था वो मोमेंट जिधर एम्बापे के पेस को रोकने में नाकामयाब रहे वॉर्सी, एंड उसके बाद रोनाल्डो का जो ब्रिलियंस था वो हम लोग को देखने के लिए मिला था. But I think the way later on also we saw Carmen Tikka trying to Hmm. do something similar like that. I really felt that that attempt by Ronaldinho should have been a goal by Carmen Tikka standards. But I loved how Varsi took that pause and then suddenly realized the threat coming in from the heavens above. All those long passes being made, and instantly fixed that, and then kept a lot of that possession. Knew what Carmen Tikka was trying to do and fixed it, and also scored an equalizer, and has been looking ever so good from there onwards. Now Carmen Tikka has got to look a little deep inside his playbook, find that good pass which he has already dribbled through. Whoa! How did that not go in? Oh Varsi, you need no. to calm down at this point. He needs to stabilize himself. Oh, TT, what just happened? Yes. I don't know. Like ये जिस तरीके के सिचुएशंस इधर बन रहे हैं एक टाइम के लिए, तो हम लोगों को भी शायद हार्ट अटैक आ सकते हैं ऐसे सिनेरियो पे. ओह, क्या शानदार ये मोमेंटम बन गया था, बट गोल कैसे नहीं हुआ वही हम लोग भी सोच रहे हैं. मैं तो इधर स्कोर लाइन की तरफ देख रहे हो कि अभी भी 1-1 ही है, जो कि इधर 2-1 हो सकता था. बट वन वर्ड की अगर बात किया जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से फिलहाल के लिए कमबैक तो दिखा था पिछले हाफ के लास्ट कुछ मोमेंट पे. फिर से कुछ मैजिकल करने की कोशिश था, लेकिन वो मैजिक के बीच में आते हुए लॉजिकल वैन डाइक, और दोनों चीज एक साथ तो नहीं हो सकती. Yeah, I mean there are certain things that you cannot stop, and one of them is Virgil van Dijk making a beautiful interception. Oh, that looked tight. I mean, courtesy to Varsi though, he's holding on. He's holding on. He's not giving in. His nerves are not breaking down. And this is a really nice pass with Hakimi. He's got that brilliant pace, a beautiful ball roll. Can take the shot, but decides to go after Ronaldo. A skill move, too many. Heel to heel over there. I felt that was unnecessary and could not convert it. There was a gap between two defenders, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हिल टू हिल किया वो राइट साइड चले गए एंड उनके जो एंगल था उसको खुद ही इधर कम करते हुए दिखे, एंड दैट्स वाई इधर गोल नहीं हुआ एंड वो डिफ्लेक्ट होकर चला गया. सो ऑब्वियसली कुछ कुछ टाइम हो जाता है कि आप पहले से ही सोच लेते हो कि हाँ मुझे यही करना है, तो वही जगह पे आप जो है वो फंस जाते हो, एंड वही चीज़ हुआ इधर अमन वॉल्सी के लिए. 2-1 हो सकता था, हैदराबाद एफसी आगे निकल सकते थे, बट इस बार चांस एंड मौका बनता हुआ चेन्नई एफसी के लिए. चेन्नई एफसी मौका बन चुका है. मोमेंट डिफेंडिंग द लास्ट वॉल वैन डाइक. Varsi, stop it. Stop it, Varsi. Stop giving us heart attacks like this. We've had enough. And I do not know who's the keeper over there. Is it Van der Sar or is it Van Dijk? Because no wonder he's been doing that job for so long. And now this could have been really game-changing, but Lucio comes for the rescue and got to give props to Varsi. He's been holding on and on and on against Carmen Tikka's relentless blows and somehow still living, and this could change it all, but offside. This time Varsi did not fall for it, and finally this match looks so much more alive. वाओ, मैच कोई अगर देखने आते हैं तो कुछ इस तरीके के एंटरटेनमेंट के लिए देखने आते हैं, एंड व्हाट एंटरटेनमेंट इट इज. लाइक क्या हो रहा है इधर गेम के अंदर. हालांकि इधर ज्यादातर जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन एंड डेंजरस सिचुएशन बन रहा है हैदराबाद एफसी के लिए ही, लेकिन देख के मजा जरूर आ रहा है. एंड आई थिंक हैदराबाद एफसी के जितने भी फैंस हैं
वो अभी के लिए जो है वो प्रेशर नापने की मशीन के साथ बैठे होंगे क्योंकि इधर बार-बार जिस तरीके से उनके गोल के ऊपर चार्ज अप किया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा टफ होगा इसके बाद। लेकिन इतना बार बचने के बाद मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि शायद अमन वर्सी के लिए एक बहुत ही अच्छा जो लक एंड उसी के साथ डे है वो काम कर रहा है एंड वो शायद इधर से गोल स्कोर कर सकते हैं। मेबी, मेबी ये एक पॉसिबिलिटी है। I mean, it's a possibility, no doubt. There is that definitely there. But you know what? I really want to see this game just not ending in a draw, right? I want to see somebody winning. हुँ। And there you go, Kamantika looking for a cutback, but the touch was a little too heavy. And eventually, well, the ball just went out of play. And now this gives Varsi an ample opportunity to try and build up something for himself. As, yeah, ladies and gentlemen, we will have the camera fixed for the players in a little while. You need not worry about that. But I think Karmantika, he's trying to make a move. A much better vision at what Varsi is doing on his defense over there. As we are back with the game, back and forth, passes being made. And Karmantika, this could have been a golden opportunity, TT. But the power Yeah. clearly lacking. And Karmantika might be kicking himself in the foot at this point. या भाई बट आई थिंक जितने भी कुछ एक्शंस हो रहे हैं अभी तक वो यही पार्ट ऑफ द ग्राउंड होता हुआ दिख रहा है दैट्स व्हाई इतना क्लोजली हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं बट ऑन द अदर हैंड अमन वर्सी की अगर बात किया जाए उनके पास बहुत सारे अच्छे खासे मौके अभी भी आ सकते हैं आखिरी 7 मिनट का गेम बाकी बेलिंगम जो पहले राइट साइड पे देखिए हकीमी रन नहीं निकाल रहे हैं हकीमी अगर इधर से ओवरलैप पे निकल जाते मे बी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक आउटकम निकल के आ सकता बट इस बार के लिए बेलिंगम चुप पहले से रोनाल्डो एंड बहुत शानदार तरीके से ये गेम हम लोगों को चलता हुआ दिखा एंड देखिए इस बार मौका बन सकता है एंड पुलीत लेफ्ट साइड से थियो हर्नांडेज रन तो निकाल चुके थे लेकिन कोशिश किया गया था पेले के लिए ताकि पेले को इधर बॉल मिल जाए बट नहीं बीच में रोनाल्डिनियो का इंटरसेप्शन एंड उनके पास प्रॉपर गोल लेग बॉल का जो कंट्रोल है वो आ चुका है Oh yeah, and you know, in these dying moments, Carmen Tikka, I think there was a point just before the halftime where Varsi had started taking the momentum after scoring that equalizer, but feels like it has been lost. And that being said, that final whistle has been blown. You know, this was a brawl fest between these two amazing players that there could not have been an end result to this. Ends in a draw, and this tie is also going to end in a draw. But what a play by these two lads. I mean, Karman Tikka in those first few minutes of the game goes on to score a goal. And Varsi, realizing what Karman Tikka wanted to do, made those changes after taking that pause, after which he managed to find the equalizer of his own. But then Karman Tikka realized at the stroke of the halftime that he needs to change his tactics. And he exactly did that. There were a few chances, though, where he had created and where we felt there could have been goals. Not just this one that we saw, but a few that we will see after this. But this one was so well done. You know, look at that fearless execute. And there had also been instances where Varsi could have scored one more, but this one, I think, you know, Ronaldinho just kind of maybe wanted to tap in from his, heel over there or something. I do not know. He just missed. But either ways, now considering the fact that Hyderabad FC won the first game and Chennaiyin FC won the second and the third ended in a draw, both of the clubs are going to be sharing points. या एंड चेन्नई एनएफसी बैक टू बैक 2 मैचेस के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट्स निकालने में सफल रहे ओवरऑल अगर बात किया जाए बट दोनों ही टीम के पास दोनों ही क्लब्स के पास मौका था आखिरी गेम के अंदर कि वो इधर मैच को जीत के जाए क्योंकि वैसा कुछ हुआ नहीं था सो आई थिंक इधर थोड़ा बहुत देखे खेलने की ज़रूरत है एंड वो हम लोग डिस्कशन कर ही रहे थे कि जो प्लेयर्स है कुछ कुछ पहले से ही जो है सोच के रखते हैं बट या मोस्ट वैल्यूएबल
प्लेयर ऑफ द मैच जेनोसाइड एफसी, इस पे कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि यही अकेले प्लेयर हम लोगों को देखने के लिए मिले जो कि एक वन साइडेड डोमिनेशन के साथ इस पूरे अपने गेम को दिखाए थे। एंड फॉर वन साइडेड डोमिनेशन बहुत बहुत ज्यादा एंजॉयबल था। Yeah, I mean, no second thoughts about that. I think has to be my favorite match this evening, right? And this brings us to the leaderboard. Let's see what the masala has, stirred things up in that curry that we are trying to brew up. Where FC Goa find themselves at on top, but Chennai FC now this is something that will start hurting them, right? They've already played two matches, and both of them have ended in a draw. Now they've secured 1 point each. It's still better than having two losses, but Chennai FC, considering the defending champion and such a good stacked lineup, this is not acceptable by any means. ATK Mohan Bagan, they also won their tie and have managed to gain those 3 points. Bengaluru FC, yesterday we saw how good they were, right? So they're still going to hold Yeah. on to that third spot. But for the others, I think, especially for Odisha FC, Northeast United FC, and Kerala Blasters FCTT, I think they have some time to prepare and come back strong next week. फॉर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो अगर इधर से प्रिपेयर नहीं करें तो आई थिंक बहुत कुछ उनके लिए नेगेटिव जा सकता है। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए इस हफ्ते के अंदर, इस वीक के अंदर जो मैचेस उनकी तरफ से खेला गया है उसमें कोऑर्डिनेशन में लैक देखने के लिए मिला। आई थिंक मुझे लगता है कि प्रेशर उतना हैंडल नहीं कर पाए थे। हालांकि उनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, बट फिर भी जो है वो हर टाइम सेम नहीं होता आपके लिए। तो वही चीज़, शायद टाइम नहीं था या फिर फॉर्म नहीं था, काइंड ऑफ बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। लेकिन आई थिंक जो इसमें लाइक पूरे एक वीक का गैप उनको मिलेगा, वो वीक के अंदर वो प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, एंड वो बहुत ही स्ट्रांगली एक कमबैक दिखा सकते हैं नेक्स्ट वीक। You know, finally, this one good thing has happened. We have seen all these clubs, and we have seen them play at least once. And that being said, ladies and gentlemen, we are finally done for this week, right? We're going to go on a little bit of a longer pause this time. You know, we will be seeing you next on 11th of March. So save your dates. And well, here are our socials. If you like us, if you love us, then don't forget to follow us, or maybe just slide into our DMs. We would appreciate that. But that being said, we are finally done with the show for the night. We're going to be calling it a night. Till then, you guys take care and have a good day ahead.